students, yes. Okay. See, dear students, yesterday we have discussed what? Now, recruitment and selection. Human resource. We are there in the unit 2, and in unit 2 already we have completed the human resource planning. Then we have discussed related to something related to recruitment. No, what is recruitment? What are the sources, methods, and types of recruitment? Then we have discussed the selection. No, what is selection and what are the process of selection? Wait a moment, I will share this slide. After process of selection, what it relates to, already we have discussed many things. This is the selection. Yesterday we have discussed. So process of selection, it is the step-by-step procedure, and it is a common procedure adopted by the organization, but it's depend on the organization what as per their requirement they can adapt it. No, suppose आम ये कौन कहले ना बहुत सारा स्टेप्स अच्छी ता भितर डिपेंड करछि ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप को अडॉप्ट करछि और एक्सेप्ट करछि ता वाइज से डिपेंड करछि नो. So but ultimately, so this is a common procedure, the organization adopted this, and in this procedure already we have discussed the screening of application, what you mean by this, and preliminary interview, application blank, selection test means it is the basically what different kind of written test for the candidate, and once the candidate will select in the written examination, then they can go for the selection interview. And selection interview, again variety kind of selection interviews are there. The selection interview related to what I told you yesterday, the types of interview. One interview. One interview means what? See, one interview in this area, one interviewer and one interviewee, right? So the participant is one, the interview means the candidate. Okay, one candidate and interviewer also one. So one-to-one interaction between the interviewer and the interviewee. Here the interviewer, basically whatever maybe the question will ask to the interviewer, that is the only one single person will be there. So there is the basically this kind of interview conducted by the organization also. Then sequential interview. Sequential interview, see here the basically what we can say, the series of things will be happen. It means what? Sequence means basically the candidate can while the candidate will qualify in one area, one round, then the candidate will go to the next level. If the candidate will qualify in the next level, that then the candidate can go to the another level. So this is what the sequence. It means what? Suppose we can take the example, room number 1, room number 2, room number 3. No, room number 1 having some kind of interview, room number 2 also, and room number 3. Suppose in room number 1 and round 1, if the candidate will qualify, no, in that category of interview, then you can move to the room number 2 and the second round. That is the another kind of interview. And when the candidate will qualify in the room room number 2, and then he can move or she can move to the room number 3, that is the third round. So that is the round 1, round 2, and round 3, and round 4. Maybe round 1, round 2. It depends. No, basically what? So and different there are a variety kind of rounds will be there, and where the candidate can face and the different the round and different kind of interviewer and different kind of what the question will ask the interviewer. Suppose I say round 1, room number 1, round 1, it may be the general interaction between the interviewer and the interview, right? If we will qualify in that area, then we can move towards the round number 2. Round number 2 city kontibo, it may be that is the technical round. In the round number 2, technical round means the interviewer will ask some kind of question related to your what, related towards your basically related to towards your subject, related towards your study. No,
entire tomorrow MBA ro jaha jaha chi se pachari pare, that is a technical round. And if you will qualify in the round number 2, then you may go to the round number 3. It may be the HR round in the round number 3. So basically sequence, if you will qualify in one area, then you can move towards the next level. So this is the sequential interview, right? Then we can go for the panel interview. Panel interview means what? Basically here, one interview and many interviewer will be there. One interview, many interviewers. See, the interview procedure, it is basically interviewer is the on behalf of the organization, interview is the candidate, and the situation, the process we can call as an interview, right? So interviewer, interview, and the process and the situation we can call as an interview. Where the panel interview, the many person, many interviewer will be there in that particular area. बहुत जन से area रे थाई पारंती. It may be definitely more than one तक compulsory, right? Panel रे more than one तो रहिबे. It may be 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's depend on the that decided by the organization, right? So 2 or more person to say it, that is the panel interview, and one interview will be there where that say ता भितर depend करछि के question पचरी से माने already decide करथिबे. समस्ते पचरी पारंती. Out of many, maybe 2-3% they can ask the question. It's depend, right? This is the panel interview. Panel interview just opposite है कौन कहिला group interview that we will discuss. No. Apart from these, one-to-one interview, sequential interview, and basically we can say the panel interview. The another kind of interview, category of interview are also there. No, it related to non-directive interview. The non-directive interview, what do you mean by this? Non-directive interview or unstructured interview. Directive interview or structured interview, right? Mixed interview. Amane kono? See, non-directive interview or unstructured interview, it implies whatever may be the things, no, whatever may be the question will ask to the interview by the interview to the interviewee. So at that situation, what will happen? That is not decided by the organization. No, it may not be pre-decided question. It may not be pre-fixed question. No. So what? The non-directive unstructured interview, the interviewer will ask the question that is spontaneous. As per the level of knowledge of the interviewer will ask the question to the interview. The माने कौन है कि non-directive unstructured interview कहूची कि एटी interviewer question कर पचारिबो interview को जोटा तार knowledge wise तार माने कौन कहला level of ये wise माने कौन experience knowledge wise spontaneous समति किछि decide ही नथिबो हैला समति से सब हाँ समति किछि decide ही नथिबो सेटा सब परे माने सेटा कौन कहला prefix pre decided ही नथिबो सेटा से ताकू जहां सेठी ठीक लागला से टाइप रो सिचुएशन को नेकी क्वेश्चन पचारि परिबो, right? But directive and structured interview, it means what? It is pre-decided, prefixed by the organization, right? Pre-decided, prefixed by the organization. How much question we will ask to the candidate? Then what type of question we will ask to the candidate? Then how many time we will take one? How much time we will take for one candidate? तमाने एडी कौन हैला? केतेटा क्वेश्चन पचारिबा? केते टाइम नबा? को टाइप रो क्वेश्चन पचारिबा? हैला किए पचारिबे? सबु already pre-decided, prefixed है कितिबो. That already the decision already finalized by the organization, right? जेमति कि हमें कहिबा धरो फॉर एग्जांपल मु कहिबी धरो हमें जिबा ना गोटे सिविल सर्विस हमें कहिबा कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू आर द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से माने कोन कहिला सेडी एक्सपर्ट क्वेश्चन पचरिबा एज पर देयर नॉलेज हमें कहि परिबा बट तमे जदी जिबो सिविल सर्विस नले ओपीएससी एग्जाम सब इंटरव्यू देबा को जिबो ना सेडी पूरा स्ट्रक्चर्ड वाइज मान दैट इज द कंप्लीटली डायरेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड pre-decided, pre-finalized, no? सबु किछि किए केते जन बसिबे केमती बसिबे
तमे का सहित इंटरेक्शन करबनी while you will entered in the interview hall you will not interact to anybody no इंटरव्यू सरला परे मध्य सेठी आउ जते कैंडिडेट थिबे का सहित इंटरेक्शन करबनी पूरा तमे से प्लेस रो डायरेक्ट इंटरव्यू हॉल रो डायरेक्ट तमे तुमरो घर जुआर जीवो बाकी सेठी रहिबनी नो केतेटा क्वेश्चन पचारिबो इंटरव्यूअर केते टाइम पचारिबे कोन क्वेश्चन पचारा जीवो तमे कोन ये हबो सब किछि समानकर प्री डिसाइडेड थिबो पूरा basing on this they will ask the question. And mixed interview, what mixed interview means something related to directive, something related to non-directive. amane kono kichita amaro finalized take thibo pre decided hela ame jota ki final करथिबा आ किछटा ame situation based मध्ये पचारि परिबा धर मो पचारली कोन हमर फाइनल हेतिला ame डिसाइड करथिले कि no tell me something about yourself that question we will ask to every candidate no धर सेटा तमे प्री डिसाइड करथिले ता भितरे जने कहिला कि no I belongs to मयूरभंज no गोटे एरिया कहिला जो I belongs to मयूरभंज तो सेठी हमें गोटे क्वेश्चन पचारले अच्छा मयूरभंज व्हाट इट फेमस फॉर कहीं की सेटा मयूरभंज कहीं की फेमस व्हाट आर द थिंग्स इट इज देयर इन द मयूरभंज सो एटा हमें कोन कहिला दैट इज द सिचुएशन बेस्ड right that is mixed that is not pre decided but we can ask the question as per the situation right so this is a kind of mixed interview. Situational interview kon koji see situational interview it relates to basically we can say suppose hame kahiba ki the interviewer will give one situation to the interview good situation dabo the situation kon na suppose for example mo kahibi na you are going to a interview as a HR executive or as a marketing or as a finance executive tomorrow am interview pai jaiche so saidi se gote situation dabo though you are a marketing executive no though your work is how you will sell the product in the market so here we are the interviewer kahibe no we are playing role as a customer and you are playing role as a seller so se man gote product dei debe no jaha pakhre thibo so now you have to sell the product एटा ले तमरो सिचुएशन नाउ यू हैव टू प्लेइंग रोल एज ए हम जनी कोचे रोल प्लेइंग नो तमे को टाइप रो रोल प्ले करि परिबो को टाइप रो रोल प्ले करूचो नो सो यू आर प्लेइंग रोल एज ए सेल्स पर्सन एंड यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट सो यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट टू द इंटरव्यूअर एंड you have to know basically what तमे we can adopt variety kind of technique to convince the interviewer. So basing on this we can sell the product. जे सेमती सिचुएशन दे related to HR तमे exactly हमें कोथि पई जाइछे that depend no को हमें ये पई जाइछे so से अनुसार समान कोन करिवे no they can give different kind of situation and we have to play the role as per the situation हमें से role play करिवा समान जोटा जो situation देथिबे right. Group interview मु कोन कहितली it is just opposite of the panel interview. Panel interview many interviewer will be there, the number of interviewer will there and one interview, but group interview just opposite of the panel interview. What will happen here no what will happen here no basically here the many candidate will be there and one interviewer will be there. Group interview jota ki ame कहूचे कहि परिबा ना one kind of group discussion. So it कोन हबो many candidate and one interviewer. Many candidate, what will happen in the group interview? Now here, the interviewer will give you one instant topic to the candidate in the group interview, and where it may be in a group around 8 to 10 person, it will be there. 8 to 10 candidate will be there in a group, and the interviewer will give you one instant topic, and it is the basically all the candidate they will give their views, suggestions, they can share their ideas, they can explain what do you mean by that things no ame samaste ame se wise je jaha koiba ko chahunchenti ame se wise koi pari. So basing on this group interview the person je interviewer thibe they can analyze the candidate what is the basically their level of confidence, level of communication, level of presentation no they can analyze everything related to the candidate right and basing on this the interviewer can select the candidate for the next round and next level right. So this is the group interview. And stress interview see it is one kind of interview where the interviewer will ask a variety kind of question
it may be some relevant question, it may be some unrelevant question to the candidate, where the candidate little bit means the candidate no feel some kind of frustrated kind of things, stress kind of things. No, now why such kind of question will ask the interviewer to the interviewee? No, the interviewer try to analyze the level of patience of the interview. How you can so upon why you ask some kind of question to me? No, this is a procedure, this is a format of the interview. No, this is the interview format. We cannot deny it, and we cannot basically what avoid it. avoid deny accept no, this is the part of the interview procedure. No, they will ask such kind of question. No, the basically try to analyze the level of patience, the level of how the person can handle such kind of situations, such kind of stress. If some things will happen, this kind of situation will happen, no, in the organization, how much it is your capacity to handle such kind of situation. This is a stress interview. They may ask different kind of things, no. variety kind of question पचारि जेटा के माइंड को पूरा जाम कर दबो हैला जोटा कि हमें बुझी परिबानी what how we can react and how we can act. So this is what the kind of stress interview. So dear students, these are the different types of interview, no, that adapted by the organization to select the candidate. Through this, no, out of many candidates, what I told you, now in the recruitment procedure, many candidates can apply for the post. There is amar seti kichi bi emti nai ki tu kari paribe apana kari paribe no semti to no. Now as much as candidate they can apply for the particular post. Now here it is the responsibility of the organization. We have to reject all the candidate and we have to identify the best candidate for the organization. समस्त को रिजेक्ट करिबा आ बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करिबा सेटाला रिस्पांसिबिलिटी आ केमिति करिबा ना बेस्ड ऑन दिस फैक्टर एई प्रोसेस को नेकी हमें करि पारिबा राइट तो प्रोसेस कोन दिस आर द प्रोसेस once selection interview will over so see selection interview at the time of interview no हमें खाली कहिबानी कि जो इंटरव्यू आसी गला ना एठी बहुत जिंस मैटर करे गोटे कैंडिडेट पई कोन मैटर करे ना कैंडिडेट रो गेस्चर पोस्चर no body language, personality, attitude, everything that matters a lot, right? जो हमें खाली कहिबानी कि गोटे कैंडिडेट हमें माने what is the basically word हमें कहिबा कि मते बहुत I know everything, I can whatever may be the question I am ready to explain it. So ता माने ना कि मो भलो पर्सनालिटी मेंटेन करन नथिबी no, and I'm holding negative attitude towards the things. ता माने नाही कि मोर आई कांटेक्ट नथिबो ता माने नाही कि मोर पोस्चर गेस्चर ठीक नथिबो सो ए सब बहुत मैटर करे सो अपार्ट फ्रॉम दिस सी while we will enter in the examination interview hall so it's basically we have to maintain all those factor no the personality attitude body language our gesture posture all the kind सब तो तमर पर्सनालिटी भीतर जीवो जोटे के ऊपर पढुचो ना so ए सब को हमें मेंटेन करबा सहित we should know the depth knowledge about our study about our what where you are belongs to know what about our study and something related to FAQs to take a frequent last question mo kali kahitili it is there in the available in the internet in the website so apana taku download kari taku prepare kari paribe and about the organization you have to know something related to organization right organization upare pura data collect करथिबे जिबा पूर्वरु को organization कोन and you have to know about the post को post पाइन जाउचंती ता upare data collect करथिबे what is the post ता upare से question पचारिबो what is about the organization will ask the question what are the different FAQs it is compulsory and about your study these are the basically basic things no related to the interview and you have to maintain in yourself no से देखो लागिवो कि ना पिलाटा ठीक अछि no पिला किछि तो अछि जोटा कि मो I'll interact with this candidate एमती नुह कि देखु लागि बस ये गोटे कोन करि परिबो जे आ सहित मो इंटरेक्शन करी सेमती सिचुएशन नो आसो right so this is what the basically हमें कोन कहिले ना इंटरव्यू then once interview will over we can go for the कोन ना medical examination a medical examination कोन see candidate see students medical examination means here the organization will analyze
the physical and mental ability of the individual. Whether you are physically and mentally you are fit or not. ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଉଟା କି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଧର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଲୁ ବଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି you have some visionary problem, you have some hearing problem, no, you have some basically what ଆମେ କହିପାରିବା କି you have some what some kind of disease, it may be the person, that's why person every day ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, person feeling ill and not the more absenteeism it is there in the organization, no, absenteeism rate is more in comparison to present, no, এই যদি situation ହେଲା ନା, so ultimately କଣ ହବ, the organization will suffer like anything. That's why आजिका डेट रे तो वैरायटी काइंड ऑफ माने हमरो ये आसुची ना, तो सेहिति पे हमें कोन कले नो टू एनालिसिस द मेंटल एबिलिटी हमें देखिले कि नहीं गले पिलाटा को बट तारो मेंटली से नॉट दैट मच ऑफ साउंड ना, इन साउंड मेंटालिटी हमें कहि परिबा, राइट. सो एई सब कारण रु से माने कोन करंती ना, मेडिकल एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी, medical examination is compulsory, and where we can analyze the level of vision, no, the hearing capacity and mentality, no, mentally physically सब हमें देखि परिबा. So overall we can say whether the applicant medically suitable for this specific position, for this specific job, the person is fit for the job or not, that we can analyze, that the organization try to identify, right. ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେମିତି ନ ହଉ ହେଲା. ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଦ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ. ଏଟା ଯଦି ଆମେ ତ କହିବା କି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ନା, ସବୁ ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଠିକ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ, ବଟ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଇଟ ଇଜ ମୋର ଟଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ ଦି ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସ. ମିନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ବେସିକାଲି ୱାଟ ନେଭି, ଏୟାର ଫୋର୍ସ, ଆର୍ମି, पुलिस लाइन, से तो पूरा टफ टू टफ मेडिकल टेस्ट करा जाए, नो. बट एई सब जनरल ऑर्गेनाइजेशन आमी जदी अदर सेक्टर को जिबा सेठी इते टफ टेस्ट नो, बट यू हैव टू गिव सम टेस्ट रिलेटेड टू whether you are fit for the person is candidate is fit, means mentally physically fit or not, that identified by the organization, right. Then once the medical examination over, then we can go for the reference. Checking reference माने कोन, सी चेकिंग रेफरेंस आसला को लेवल रे, बहुत परे हमर चेकिंग रेफरेंस आसला. चेकिंग रेफरेंस माने कोन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी while the candidate no, while the interview will apply for the particular position, so at that particular moment the candidate have to give the reference, 2 to 3 reference in that application form, no. ये जो हम application form दा fill up करी की देती बा ना, organization को blank application form सेठी लिखा है तो सेठी मेंशन करा है कोन ना, you have to give some 2 to 3 reference देती बा, 2 जन के 3 जन reference आपण दियंतु हैला. से reference की, so that reference may be from your it may be the former employer, it may be जोटा कि आपण आगुरु काम करथिले से ही पारे previous employer, it may be your basically what the organization head हे परिबे, it may be your आपण जोटी पाठ पढथिले साइट रे हेड हे परिबे, it may be some dearest person, some famous person हे परिबे, anyone you can give as a, but बाकी से लोक आपण को भल से जानि थिबे, right. and आपण को माने कोन, आपण तांको जानथिबे, से आपण को जानि थिबे भलो, but the person must be related to you. So ए टाइप रो आपण 2-3 टा रेफरेंस एटी मेंशन करथिबे, वे जो आपण रेफरेंस देथिबे, no, you must be familiar with that particular the refer person must be familiar with the candidate, where the organization will call to the referred person जोटा आपण रेफरेंस देथिबे ताको कॉल करिकि से they will collect some information related to candidate. के कलेक्ट करिवो, organization will collect all the information related to candidate कि आपण कोन exact what you are. आमे तो जदी देखिबार माने कोन आजिका डेट रे बहुत वैरायटी कलेक्शन करचंती, नो, डेटा कलेक्शन करचंती ऑर्गेनाइजेशन मान नियरेस्ट हमरो जानिबा पई बोली whether you are that what kind of things you are, no. So सेति पई तो पुलिस स्टेशन रे जाय के इंक्वायरी करा जाय,
सो आपण सेडु आनिबे पंच आपण को सरपंच टु आनि के डिटेल ता आपण को इन्फॉर्मेशन देबे ए टाइप रो मध्ये बहुत सारा आज का डेट हेलानी बट स्टिल रेफर्ड मींस नो जो जो आपण हम रेफरेंस देइतिबा द ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू that referred person what you are. So all kind of question they will ask to the means that they try to identify exactly what you are. So कौन आपनकर बिहेवियर कौन आपनकर एटीट्यूड कौन आपनकर लेवल ऑफ वर्क ये कौन आपन केते भलो केते खराब कौन सब किछि समान देल आस्क द क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर exactly what you are. No, so this is what the checking reference. And last tell आपनकर once reference over then we can go for the employment. Now employment रे हम कोन करी employment means it is a final selection. See, up to medical examination, in fact up to sometimes in fact reference, this is the rejection area, right? The candidate empty nuho कि आपण selection interview रे selection है गले means you are selected for the organization. No, if you may be selected in the interview, all the steps you qualify, but if the person may not be fit in medical जदि आपनकर ग्राउंड रे कोनोसी प्रकार भी प्रॉब्लम आसिला, then the person may be rejected, right, in the selection procedure. In fact, reference asking the while the organization will ask the referred reference रे तो से आपन को जानचंते माने आपन को रिलेटेड कोनोसी भी माने नेगेटिव कहिबेनी, still if the person will give any kind of feedback related to you, negative feedback, then at that time also the organization can reject you. So this is the basically what out of many candidate 1000 लोग apply करथिले ता भितर हम केते बाचिले हम केते सिलेक्शन कले out of 1000 we can select 10 candidate. So this is and that 10 candidate get the employment opportunity and they will join in the organization. से 10 जन कोन कले employment पाइले और से माने organization रे place हेले. So it कौन कहबा. So see, selection basically what now based on the human resource planning, organization adapted doing the recruitment on the basis of once recruitment part over, then we can move towards the selection, right? It is a step-by-step procedure. Selection, based on this process, we can identify the best candidate for the organization out of many applicant pool. We can identify the best candidate for the organization. It may be basically what out of 1000 or out of 500 or out of many 500 post है 5 लाख 10 लाख पिला अप्लाई करथंती. No, so सही रेशियो रे हमें कोन करचे ताको गवर्नमेंट जो सब करंती एसो बारतिला कि आपनकर ओएस एग्जाम में हितला इना. So सही रेशियो रे पिला अप्लाई करंती, राइट? रेलवे बाहरी बहुत 1000 के पोस्ट की 5000 पोस्ट बाहरती हो तपे 5 लाख 10 लाख 20 लाख पिला अप्लाई करते. So this is the ratio, no? So basing on this we can identify the best candidate and we can give the employment. Once हमें employment दे देले समान को तपरे हमें next step कौन जीबा, we can go for the induction. एटा स्लाइड रे नाही मु सेटा जस्ट कहूची भल से ध्यान रे सुनी देबे. This is one another question, no? कौन कहूची ना once employment over then we can go for the placement. कहा को placement देले ना we can give placement to the candidate को हमें placement देले, right? Placement रे हमर कौन आसिला ना placement relate to the induction and orientation program. Selection over, placement start, and in the placement we can go for the induction and orientation. Now what do you mean by induction? Induction कौन मने रखिबे ध्यान रे सुनुथिबे. Induction means what? See, induction means it is a welcome program for the new employee. Induction कौन ना केते बेले इटा हबो आफ्टर प्लेसमेंट सरिला परे माने सिलेक्शन सरिला परे एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट प्लेस हे गेल एम्प्लॉय माने सेठी हमें कोन करबा ना वी कैन कंडक्ट इंडक्शन प्रोग्राम टू द एम्प्लॉय. Now what do you mean by induction? Induction means it is a welcome program for the employees, for the newcomer, where the organization will introduce the rules, regulation, policy and procedure. किए इंट्रोड्यूस करिवो ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करिवो कहा को इंट्रोड्यूस करिवो न्यूकमर पे इंट्रोड्यूस करिवो, right? So induction altogether it is the basically welcome to the new employee where the organization introduce the rules, regulation, policy for the new employee, and it is the warm interaction between the existing employee as well as the newcomer.
know how many existing employees are there and how many newcomers will entered in the organization. That is the interaction between the existing employee and the newcomer, where the newcomer basically identify who is my superior, who is my subordinate, what is my area where I have to work, everything the newcomer they can analyze by the organizers, identified by the organizers, and they can also feel like, this is my workplace. They can feel very healthy, very good. They can feel good and they can feel healthy towards the organization through the induction program only. Right? Wait a minute. तो ये जो मैं इंडक्शन प्रोग्राम कले, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इंडक्शन माने मु कोन कहली ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम? सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम conducted by the organization, it is the जमती रिक्रूटमेंट कंपलसरी, सिलेक्शन कंपलसरी, इंडक्शन मध्ये कंपलसरी, राइट? ए सब बिना आपनकर प्लेस आपनकर यू कैन नॉट प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, right? So it hame kon kale na, in the induction program basically what will happen, so here the what are the objective of induction program? The objective is that to remove fear by the candidate. Objective kon kochi to remove fear. Fear means basically while the candidate before entered in the organization, no, candidate having variety kind of tension, stress, anxiety kind of things by the candidate towards the organization, no. Who will be my superior, who will be my subordinate, what kind of organization will be there, no, how I will work, कौन करिवि, ए सब वैरायटी काइंड ऑफ माइंड रे ना गोटे टेंशन चलथिबो. सो ताको रिमूव करबा पई, से जो फियर टेंशन को रिमूव करबा पई ऑर्गेनाइजेशन एई गोटे फेमिलियर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करा, राइट? जो थिरे की नो we can welcome the candidate, and also there the candidate can feel kind of familiar situation in that particular area, and basically where the candidate can remove their fears, remove fear, create good impression towards the organization, and collect also valuable information. तमने एटी कोन कहिले ऑब्जेक्टिव कोन ना, ऑब्जेक्टिव होची हमर फियर रिमूव होबो and create good impression towards the organization. हम गोटे organization प्रति हमर गोटे नुवा impression आसीबो, and we can collect also variety kind of information as per our requirement. जहा हम requirement अछि ना, हमें से type रो variety kind of we can collect in that particular area. Apart from these, to know the company history, no, आमे से कौन collect करि परिबा ना, the objective of induction program, the candidate, the newcomers, they can collect the company history. Now what is the company, where it has started, and what is the basically what turnover of the company, everything, whatever you want, you can collect in that particular area. To collect the history, to know the history of the organization, and to know the different department of the organization, of the company or organization, to know the different department, how many departments are there, कितने प्रकार डिपार्टमेंट अछि, टू नो द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट केते अछि, प्रोडक्ट केते अछि, केतेटा प्रोडक्ट अछि, एंड व्हिच प्रोडक्ट आई विल वर्क, को प्रोडक्ट रे मो काम करिवि, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट, एंड व्हिच प्रोडक्ट आई विल वर्क, को प्रोडक्ट रे, को डिपार्टमेंट रे, को प्रोडक्ट रे मो काम करिवि, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, you can collect, you can know the rules regulation of the organization. Rules regulation means what? Every organization having some rules towards the employees, what you have to do, what you should not to do, कौन करिवे कौन करिवेनी, ये सब हला related to rules regulation. So सेटा से आपन को मानक सहित पूरा आपन चिटी ये करि परिबे, जेमति कि से कहबे आपन you have to enter every day, the timing is 10 to 6 o'clock, before 10 you have to reach in the organization. If you will come after 10, then what will happen? आपण जति 3 दिन लेट रसिबे आपण को गोटे सीएल कटिबो. सो ए टाइप रो बहुत सारा से माने गोटे रूल्स रेगुलेशन, नॉल तो केही आसीबे ना टाइम रे. So सेति पे से माने while inside the organization there is strictly prohibited, no smoking, drinking, chewing gutka, pan kind of things, that is strictly prohibited. एमती कहि के से गोटे बड़ रूल्स रेगुलेशन सब organization बनै छै, and you have to accept it and you have to obey it. If you will not follow the guideline, then what will happen? Someone say if you will violate the rules regulation, what will happen? Then we can take the
legal action, or we can take any kind of the action towards the candidate. So this is what the you can know the rules, regulation, policy of the organization. Apart from this, you can basically collect the facility benefit, what the kind of facility and benefit organization providing to the employee. No, ଆପଣ ସେଠି କଣ କଣ facility ପାଇବେ, benefit ପାଇବେ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ information ଜାଣିପାରିବେ. So all together ଆମେ କହିବା you can collect each and every information and you can basically know clearly about the organization also. That is the most important factor of induction. And after induction is basically what we can say, it is a 1 day program, or it may be it's depend kete time se mane ye karibe joti ame welcome kariba candidate mananku, right? It is a basically 1 day program hei pare. So once induction over, then we can go for the orientation. It is a small kind of training program, no? Induction overs joti ki apanko induction re kon apanko welcome pe apanko bouquet dia jibo, apanko mane kichi lunch arrangement kara jaitibo, बहुत सारा जिनस सेठी आपनक पई जोटा कि गोटे भलो ट्रीटमेंट करा जिवो न्यू कमर्स को. Then once it can over, now we can go for the orientation means it is a small kind of training program conducted by the organization to the candidate, right? सेठी हमें गोटे small kind of training program दबा. कोन ट्रेनिंग ना related how you will work in the organization, केमिति आपण काम करिवे, कोन काम करिवे, how you can handle everything, से सबुर गोटे हमें orientation दबा. And orientation, it's depend on the how many days the organization will conduct the orientation. It's depend on the basically organization, the number of candidate and the organization situation and everything that depend on the organization. It may be 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. It's depend, right? This is the orientation. And a sabbo complete hegala pare, now you can start your journey. Apanakar got a new life, new altogether what environment, altogether new kind of journey you can start in this organization. तापर तो अपन सेठी लीड करिवे एकदम से, right? जाइथिले पूरा एंट्री करथिले फुल ऑफ फियर टेंशन, नो, तापरे you can lead the organization and धीरे धीरे प्रमोशन हेका जति अपन सेठी कंटिन्यू कले, नो, variety kind of promotion, धीरे धीरे प्रमोशन हेकी अपन पळेबे पूरा टॉप लेवल को. So this is entry कले as a management trainee. And अपन जदि सब किछि बेस्ट कले, नो, then you can basically you can reach in the top level. So this is what the recruitment, selection and placement. एठी गोटे जिंस अछि आपनकर सुनी थांतु हैला. onboarding गोटे न्यू कांसेप्ट कोन ना, onboarding process. onboarding कोन, onboarding and offboarding मुझे तेरा आसीबो कहबी, but onboarding कहूची ना, onboarding basically ना आमे ताको केते बेला onboarding process start हुए. See, onboarding process, it is basically, it can be start, no, when the organization will give the blank application form to the candidate, no, and when the organization will, it may be blank application asiboni, well the organization will give you the welcome mail to the candidate. Organization kon karibo, organization jetele selection hejibo, after selection the organization will send the welcome mail to the candidate, welcome mail pataibo, no, सेठी candidate kon karibe na, sei jo welcome mail jo se gote mail करथिबे से कहथिबो, no, you have to आपण माने ताको kon करिवे ना, ताको mail back करिवे काहाको ना, organization सेठी से गोटे प्रोसीड्यूर देथिबो लास्ट आपण सिलेक्शन परे. काहे की से प्रोसीड्यूर ता ना, why ना, out of many candidate धरंतु हमें 10 जन को सिलेक्ट कले, ता भितरे से 10 जन को जॉइन करिवे, तो कि set out of 10 candidate it may be some candidate will be there, they will not report, they will not join. काहे की ना, you may get better opportunity, you may not be satisfied the rules regulation of the organization, the policy procedure, you may be not satisfied the salary of the organization, whatever may be the reason. सेति पे आपण जॉइन करि पा न करि पारंती, राइट? जोटा कि आपण लास्ट राउंड रे आपण को प्लेसमेंट रे तो से सब आपण को से इंटरेक्शन करथिबो 4 राउंड, राइट? सो आपण मे बी जॉइन न करि पारे, तो सेही केस रे दैट पर्टिकुलर एरिया, सो से ऑर्गेनाइजेशन कोन करिवो ना, गोटे वेलकम मेल पठेबो कैंडिडेट को. नाउ द कैंडिडेट विल एक्सेप्ट इट and mail back to the organization. So where at that point of time the onboarding process can be start. Say do onboarding process start hela.
राइट ये जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रे ना जतले से स्टार्ट हबो सेठी कोन ना आफ्टर रिसीव द मेल बाय द कैंडिडेट जतले सब कैंडिडेट टू रिसीव कर दबो ना मेल सेठी ऑर्गेनाइजेशन कोन करिवो कि सेपानक पई अरेंज करिवो कोन ना नेक्स्ट फेज इज द इंडक्शन नो induction and orientation kind of things no atc decide karibo so kon se decide karibo na jo candidate mane asibe while the candidate will entered in the organization in such date no but the organization will arrange everything for the candidate kon arrange karibo na your setting arrangement where the people will work no candidate will work first na for that candidate computer apart from this all the instruments jaha jaha tankor requirement jo area se mane kamo karibe for the candidate mail id for the candidate your identity card no everything सबु किछि आपण मानक पय अरेंज करा जिवो जो माने न्यू कमर्स आसीबे एमती न हो कि आपण माने आसले आपण पय बसिबा को जगह नाही एमती न हो कि आपण माने आसले आपण मानक पय कोन से अरेंजमेंट करा जाय एंड यू आर मूविंग हियर टू देयर एमती न हो कि आपण माने आसले माने एंट्री कले जेटा कि लोक ऑर्गेनाइजेशन हमु के चिनी नांती कि आमे भी काहू जेने केई भी हमु रेस्पोंड करनांती आमे भी काहू रेस्पोंड करने हैला एमिति सिचुएशन कोन कहलो मैं कोन कहले गोटे एमती अनहेल्दी सिचुएशन माने क्रिएट न हो सो आमे कैंडिडेट एंटर द ऑर्गेनाइजेशन वार्म वेलकम सहित आमे समान को गोटे फैमिलियरिटी क्रिएट करबे केमिति हाउ इट कैन बी पॉसिबल जतले आमे सब अरेंज करबे सब राइट सो फॉर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर एवरीथिंग नो समान डे केते बळे रीच करबे ता परटु आमे सब अरेंजमेंट करबा समस्त को पय राइट अपार्ट फ्रॉम दिस and the induction program how much time we can conduct the induction program in the induction program what are the facility we will provide whether we can arrange the lunch or whether we can arrange the any kind of IT no what the in the induction program will be there ame तमनो किछ बुक के दबा की फोल्डर दबा की केते टाइम केते ये नबा कोन से एक्टिविटी करिबा से इंडक्शन प्रोग्राम रे कोन आमे गोटे क्रिएट करिबा सब किछ एवरीथिंग इट इज there it will be there in a plan process no and once induction over then we can go for the orientation how many days orientation program will be there how many person will be there in the orientation one orientation ta job kete gote training dabo na now who will be the trainer in the orientation program how much time we can whether we can provide any kind of supported material to the candidate no ए सब जिंस मु आपन को तो शॉर्ट रे एटा कहि देली बाकी इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर इट इज basically what the organization adopted everything step by step procedure and it is everything it is a systematic manner it is a plan procedure no this procedure start from the welcome mail to no it the process can continue this we can call as a onboarding process of the doing by the organization to the candidate got it students I hope ki बुझी जाइतिबे wait a moment जदि आपण माने बुझी गले देन आई कैन किए कोन पचारि पकै चंती अच्छा दीपक टिके टू वे कर देले रे पापा दीपक आर यू देयर दीपक अच्छो कि बाबू से भी कथिबो अच्छा नो मैम हाँ बढ़िया अच्छा पिले माने कार किछि डाउट अछि डियर मैम प्लीज शो दी अरे इंडक्शन ओरिएंटेशन रो स्लाइड किछि नाइ रे बाबा करिनी हैला इंडक्शन ओरिएंटेशन सिंपल किछि नाही सेइतरे छोटिया चैप्टर टा कहिल ना what is induction it is a welcome program for the new employee and the organization can introduce the rules regulation policy procedure simple हैला and सेतरे कोन ना सेइतरे हमें कहबा कि काहे कि इंडक्शन करा जाय to know to remove fear to unmute कोन मु केमती करबी unmute सेही तो दीपक अरे unmute मो पाखरे बापा ऑप्शन नाही कोड जाय कि unmute करूचंती भी मते जणा नाही exactly ma'am please explain situational interview acha see situational interview means the company the interviewer will give one situation to the candidate मोडी गुटे एग्जांपल देइथिली धर कोन एग्जांपल देइथिल धर मु गुटे कहबी हैला गुटे सिचुएशन मु एना तुमको दउची कोन सिचुएशन एग्जांपल कहूची भल से सुनिबो धर you are a person तमे गोटे हेलो लोक हम मु गोटे पर्सन मु कोन करची ना मु जाउची कोठी
ना मु अच्छी गोटे मझी सी रे आई एम देयर इन द मिडिल ऑफ द सी पूरा मझी सी रे अच्छी मो पाखरे कौन अच्छी ना मु कोठी अच्छी ना मझी सी रे गोटे डंगा रे बसिची गोटे डंगा सेटा हला बोट जोटा कि काठर बोट गोटे अच्छी हैला मो पाखरे दुईटा सिगरेट अच्छी मु मो डंगा आ दुईटा सिगरेट हैला कोठी अच्छी पूरा मिडिल ऑफ द सी रे अच्छी नाउ मो रिस्पांसिबिलिटी हैला से सिगरेट को मु जळेबी मो पाखरे ना मैच बॉक्स अच्छी मो पाखरे किछि नै डंगा मु आउ दुईटा सिगरेट हैला मोर सिचुएशन हैला कोन दिस इज द सिचुएशन नो से सिचुएशन रे मु कोन करी मते से सिगरेट को जळेबार अछि राइट हाउ आई विल डू दिस को मते कहबे दिस इज द सिचुएशन फॉर यू नो इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी यू हैव टू मते कोन करिया पड़िबो ना मते जळेबा को पड़िबो सिगरेट सेटा गोटे सिचुएशन से मते देबे मु मोर जळेबी केमते सेटा मु डिसाइड करबी दिस इज द सिचुएशन हाउ कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ए टाइप रो सिचुएशन से माने हमकु देबे धर तमे जाइचो गोटे तमु गोटे दे देले गोटे डस्टर तांको पाखे गोटे डस्टर अछि चक माने गोटे पेन अछि से पेन ता तमु दे देले कहले कि तमे सेल कर पेन ता ए पेन यू हैव टू सेल द पेन वी आर द कस्टमर आमे कस्टमर यू आर द सेलर यू हैव टू सेल द पेन से टाइप रो कहि परबी दीपक आसिलो कि सर हैला सो ए टाइप रो सिचुएशन से माने देबे एंड वी हैव टू सॉल्व इट बुझी गलो पिला जी क्वेश्चन पचारतिलो सिचुएशनल इंटरव्यू हैला यस मैम ओके गुड तापर असला कोन अच्छा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन हां वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कमिंग अंडर द सिलेक्शन प्रोसेस यस मैडम कि सर जी पचारतिले अच्छा ऑनबोर्डिंग हैला सुनंतु ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट प्रोसेस नो ऑनबोर्डिंग हैला वंस आपनकर सब कंप्लीट हे गला काम सब सरी गला हैला आपन सिलेक्शन हे गले वंस सिलेक्शन ओवर वंस सिलेक्शन सरी गला आपन को कंपनी कोन करबो गोटे वेलकम मेल कहली परा आपन को वेलकम कला ऑर्गेनाइजेशन को हैला कंपनी विल सेंड द वेलकम मेल टू द कैंडिडेट वेलकम मेल गोटे पठेला जो वेलकम मेल टू आपन ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हैला आपण सेडी कंपनी को जते मेल आपण से जते वेलकम मेल आपण गोटे देला आपण को रिस्पांसिबिलिटी कोन आपण थैंक यू तो कहिबे ना सो थैंक यू मेल देबे जते आपण थैंक यू मेल देबे वेलकम मेल टू थैंक यू मेल देले थैंक यू मेल देले माने आपण कोन कले यू आर एक्सेप्टेड द एम्प्लॉयमेंट एंड यू विल जॉइन इन दैट सच डेट सेइटो से स्टार्ट करिवो आपनकर काम कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबिलिटी कोन केमती वेलकम करिवो कोन इंडक्शन करिवो कोन ओरिएंटेशन करिवो ए टोटल प्रोसीजर को कोन कहा गला ऑनबोर्डिंग हैला ना मिक्स्ड इंटरव्यू माने बुझी गले जे पचारचंती हैला ओके देन ऑनबोर्डिंग सॉरी मिक्स्ड इंटरव्यू के पचारले मिक्स्ड इंटरव्यू मींस समथिंग इट इज स्ट्रक्चर्ड समथिंग इट इज अनस्ट्रक्चर्ड हैला स्ट्रक्चर्ड कोन ना स्ट्रक्चर्ड मु कोन कहिली गोटे पूरा फॉर्मेट थिबो मु से भितर कोन क्वेश्चन पचारिबी आपन कोन पचारिबी ना मु पचारिबी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ गोटे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हला मु पचारिबी से समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थर्ड क्वेश्चन मु आपन को पचारिबी कोन ना व्हाट यू कैन डू फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन दिस इज फिक्स्ड हला स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कोन हला मु पचारली सही मोमेंट रे ओके टेल मी व्हाट इज रिक्रूटमेंट हला okay tell me what do you mean by how the what are the different method of training that is may not be there in that particular interview no but interviewer can ask that is spontaneous that is not fixed by the organization that is not pre-decided right that is the basically what the combination of directive and non-directive hela जे पचारचंती एक्सप्लेन डायरेक्टिव ऑन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डायरेक्टिव स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मु कोन कहली दैट इज प्री डिसाइडेड प्री फिक्स्ड मु कोन कहली मु सपोज आमे जिबा गोटे ओपीएससी एग्जाम जिबे अटेंड करिवे सेडी आपनकर सब किछि डिसाइड हेकी थिबो किए पैनल रे बसिबे केते टाइम क्वेश्चन पचारिबे आपण केते टाइम धरंतु आपण दउचंती गोटे कोन प्रेजेंटेशन दउचंती प्रेजेंटेशन इट मस्ट बी 10 मिनिट 10 मिनिट रो ना 9 मिनिट हो ना 11 मिनिट हो 10 मिनिट रो प्रेजेंटेशन देबे सेटा डिसाइड हेकी अछि स्ट्रक्चर्ड रे अछि हैला सेही आपण जो 10 मिनिट देबे ता भितरु से माने केतेटा क्वेश्चन पचारिबे ए सब ऑलरेडी डिसाइड करथिबो ऑर्गेनाइजेशन राइट एटा को कहला गेला स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड माने कोन कहिले समाने at that moment they will ask such kind of question that is as per the level of the interviewer knowledge इंटरव्यू ता नॉलेज वाइज से क्वेश्चन पचारिबो मिक्स्ड हैला दुटा को मिसै दबा किछटा हमें स्ट्रक्चर्ड वाइज सिबा किछटा अनस्ट्रक्चर्ड वाइज सिबा हैला
So that is the mixed interview. Asla ki Deepak आज्ञा मैडम 2 way कर देला आज्ञा कर दूची हेला स्टूडेंट्स बुझिलो जति के पर्यंत क्वेश्चन पचारथिला ना आपण एना क्वेश्चन पचार परिबे आपण को यूनिट 2 कंप्लीट हे गला नो वी कैन गो फॉर द यूनिट 3 टुमारो वी विल डिस्कस यूनिट 3 ऑफबोर्डिंग म कहितली ऑफबोर्डिंग म कहिबी जतले से सिचुएशन आसीबो म ऑफबोर्डिंग कहिबी एना ऑफबोर्डिंग रो क्राइटेरिया आसीनी आ ऑनबोर्डिंग क्राइटेरिया आसले म ऑनबोर्डिंग एक्सप्लेन करली ऑफबोर्डिंग जतले आसीबो म सेतले सेटी एक्सप्लेन करबी yes na clear. all clear very good Ma'am, offer letter comes under onboarding or not? जतले एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर पाई गले हैला पाई गला परे ऑर्गेनाइजेशन रो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हे गला से स्टार्ट करियो आपण कोठी बसैबो केमति आइडेंटिटी कार्ड बनैबो कोन फैसिलिटी दबो केते दिन इंडक्शन करिवो केते दिन ओरिएंटेशन करिवो ए सब वाला ऑर्गेनाइजेशन ए जो प्रोसेस टा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करिवो ताको कहा गला ऑनबोर्डिंग जदि आपण के क्वेश्चन पचला नो व्हाट डू यू मीन बाय ऑनबोर्डिंग ना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इट कैन बी स्टार्ट व्हाइल द ऑर्गेनाइजेशन विल सेंड द वेलकम मेल टू द कैंडिडेट. Then after the organization will arrange everything for the candidate, like the organization will give the arrange the every the sitting well the candidate will means what the basically what related to induction, related to orientation and related to all those things. So basing on this the process we can call as a onboarding. बुझ गले ना? Yes ना? Okay. आउ कार किछि डाउट? मैम एम्प्लॉयमेंट बिफोर आसे ऑफर लेटर ऑफर लेटर रे हमें कंफर्मेशन दो तो ऑफर लेटर रे कंफर्मेशन देले ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म हैला कि कैंडिडेट जॉइन करिवो बोली yes हां तो आफ्टर दैट बिफोर जॉइनिंग किछि दिन पूर्वरु गोटे वेलकम मेल आसे जो ऑफर लेटर आसी हमें कंफर्मेशन देलु सेटा भी तो से कंसीडर करिवे कि कंफर्मेशन बोली एटा हमरो देन कंफर्मेशन दबारे किछि सेंते किछि बेसिकली ना माने बेसिकली एटा कोन कहले एटा गोटे प्रोसीड्यूर ऑफ द सिलेक्शन कि हमें गोटे वन वेलकम कलो हम कैंडिडेट को नो so जोटा कि candidate feel some kind of good towards the organization, that is the main motive. बुझिले ना? Got it ma'am. Thank you ma'am. कोंतो आज्ञा या आपनकर सुभा जाउनी सर वॉइस मैम गुड मॉर्निंग हां किछि सुभा गलानी हां हेलो ना वॉइस आपनकर क्लियर ना एक्चुअली किछि सुभा जाउनी आउ कार किछि डाउट ये भी तो पॉसिबल ना हेलो अदा कटी सर आपनकर साउंड ना कटी का आछि हेलो मैम हां हेलो मैम मु को पचरथि कि एम्प्लॉय वेलफेयर भितरे जेमति कि हमर बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय की सब मोरा माने मिलुची आज्ञा से विषय रे किछि आलोचना हबार अछि ना नै हबो आगु को अछि से सब हैला आपन एम्प्लॉय वेल आज्ञा हां पीएफ ईएसआई प्रोविडेंट फंड से सब अब पीएफ ईएसआई प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी सब डिस्कशन करबी आपन को वेजेशन सैलरी सेटा अछि हैला हेलो आपन को वन वेजेशन सैलरी वन चैप्टर इज देयर इन योर यूनिट 4 right there I will clearly explain what is pf what is gratuity what is provident fund everything I will explain there. Thank clear you. okay मैम जॉइनिंग परे जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा जे कैंडिडेट रो से प्रोसेस रे कोन से सब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रे बट मैम सेटा तो ओरिएंटेशन आफ्टर ओरिएंटेशन जॉइनिंग परे बैकग्राउंड को वेरिफिकेशन हुए इज इट यस मैम जॉइनिंग परे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा अच्छा मैम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दैट किछि क्रिमिनल केसेस अछि कि किछि सेना तो जॉइनिंग पूर्वरु ना आपनकर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जोटा कि सेटा मैडम डिपेंड करे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सी राइट माने सेटा एग्जैक्टली कोन होची जोटा कि आपन को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ता तो बिफोर जॉइनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट डूइंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल इफ आफ्टर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आफ्टर योर जॉइन बाय आफ्टर जॉइनिंग doing by the organization but it's vary from organization to organization but eta procedure होची कि हमें बिफोर जॉइन हबा पूर्व ही अपन धरंतु क्रिमिनल केस ता एना धरंतु अपन जॉइन करिवे आर्मी रे जॉइन करिवे अपन कोन आर्मी रे जॉइन कर सला परे हमें क्रिमिनल अपन अछंती कि नै हमें एनालिसिस करिवे कि मैडम नो हमें केते एनालिसिस करिवे
कि आपण जॉइन हबा पूर्वरु देखिबा आपनकर जोटा कि आपण नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो कि नियरेस्ट आपनकर जहा सब अछंती सेइठु आपनकर डिटेल इन्फॉर्मेशन ता हमें कलेक्ट करिबा बट बाकी जदि ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करूची आफ्टर नो जॉइन सेटा वेरी करची ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम कंपनी सर प्रोबेशन पीरियड भीतर ही सेटा वेरीफाई करती है एग्जैक्टली पीरियड अच्छा अच्छा मैम मैम am I audible now, ma'am? Subrat हाँ Kumar this side. हाँ Yeah, ma'am, I have two questions about that. Okay, okay. अभी जो background verification के बारे में रहा, because you know I am just working in a IT company and IT company in finance department. तो बेसिकली क्या है कि जो कह रहे हैं ना दोनों चीज पॉसिबल है। एक तो ये कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल यू आर राइट मैम, बिकॉज 90% 95% है ना बिफोर ज्वाइनिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वेरी गुड। What practically I am doing, but some companies they're just doing after after joining in provisional period, I mean 3 months 6 months as per their requirement. So that is very little cases, that not more. Majority cases before joining before joining, right? Yes, very good. हाँ ओके। और ये तो है मैडम जो क्वेश्चन पूछा था, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग बिकॉज़ दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हाट आई जस्ट है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। And I have more than 10 year experience in it, you know, I've been IT sector. Okay, good. So my practical experience, my second question जो मैम अछि एटा मोर हला कोन जो जॉइनिंग माने ऑफर लेटर एक्सेप्ट करला परे तापरे बिफोर जॉइनिंग 3-4 डेज ऑर्गेनाइजेशन सब किछि कर दी छी, आई मीन लैपटॉप्स एंड सीट अरेंजमेंट एवरीथिंग हैज बीन अरेंज्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट। ओके ओके। बट बिफोर 3 डेज जो से आसिलानी माने मना कर देला, माने फोन पिकअप करलानी, ये करलानी, समथिंग लाइक दैट, यू नो व्हाट इज हैपनिंग प्रेजेंटली। बिकॉज़ अब रिसेंटली मोर डिपार्टमेंट रे भी सेमते गोटे हला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हेई परिबो किछि असंभव सही परिबो अनकंडीशनल सिचुएशन दैट्स हमें जो काम में सफर करछु ता काम हमें यू नो जो गोटे नोटिस पीरियड दिया जाए सी आउ गोटे कैंडिडेट खोजिला आड़ को नोटिस पीरियड, फिर देन वी हैव टू वेट अनदर 3 मंथ आल्सो, राइट? सेठी कोन करा जाउची जनरली धरंतु पिला कंफर्म कर देची बट स्टिल से कोन कला जॉइन कला नाही ड्यू टू सम द मेजर इश्यू कि तार कोन थिबो सो व्हाटएवर मे बी द थिंग्स हला सेठी कोन करा जाय आपण सुनंतु रुंतु मु आके सेटा कंप्लीट कर दिए। सेठी कोन करा जाय आपण को गोटे वेटिंग लिस्ट अन्य माने भी रखा जाय थाए, राइट? सेकंड चॉइस रे धरंतु हम आपण को प्रायोरिटी देलु तो फर्स्ट हमें सेकंड चॉइस रे कि वेटिंग रे अन्य माने भी थांती जोटा कि एई कैंडिडेट जदी न आसला रिपोर्ट न कला देन एंड देयर विद इन 1-2 डेज हमें संगे संगे डिसाइड करी कि हमें से कैंडिडेट को कोन कर देबा अपॉइंटमेंट दे देबा। कारण आउथरे हमें से प्रोसेस रे गला बेले the recruitment selection process it will take more time and ultimately it will hamper the work, it will hamper the organization and other candidate also. That's why we can take this we can what hame kaha ko aniba jo second chance जागु देथिले ताकन ए परिबो। राइट मैम मैं यही बोलना चाह रहा था मैम। ओके थैंक यू। और दूसरा मैम थोड़ा ऐड करूंगा इसमें, कुछ लोग इंडक्शन के बारे में थोड़ा परेशान हो रहे थे। इंडक्शन में आपका डूज एंड डोंट्स बोला जाता है, केयरेज बोला जाता है, आपका क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा बताया जाएगा और की पर्सन्स बताया जाता है पहले कि उनको पता होना चाहिए घर का मुखिया कौन है, घर का पापा कौन है, माँ कौन है, भाई कौन है, ये सब चीजें जैसे हम पता करते हैं। अभी देखिए अभी एक सिंपल सा हम ये दीपक आसी गले कि नेक्स्ट क्लास पाई सार की मैडम के दीपक मैडम आसिले मते कहइबो हैला आसु कहइबो। अच्छा हां मुई गोटे सर आपके हिसाब से हम एक यहाँ ऐड करना चाहेंगे। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बोले सर। हम एक ऐड यहाँ करना चाहेंगे इंडक्शन। सुनिए हाँ सुनिए, अभी क्या होगा कि जब एक लड़की ना शादी करके और एक ससुराल में जाती है, हाँ पूरा वो जो ससुराल है ना वो उसके लिए कंप्लीटली न्यू होती है ना, कंप्लीटली न्यू होता है। जैसे कि वो उधर पता नहीं चलता कि हमारा रिलेटिव्स कौन है, हमारा घर में कौन कौन है। जैसे कि हाँ ऐसे आप बोलोगे कि नहीं मैम आजकल तो हर कोई जानता है नो को हु इज माई इन-लॉस, हु इज माई कोई भी, बट ओवरऑल क्या होता है ना, ultimately the house is completely new for that girl,
नो को कहाँ पर किचन है, कहाँ कैसे हमें खाना बनाना है, क्या कहाँ पर वैसे हम कहाँ कैसे पूजा करना है ना, कौन कौन फैमिली में है, कौन रिलेटिव, एवरीथिंग इट इज कम्प्लीटली न्यू। सो हम उसको क्या करते हैं ना, उसको पूरा हम वो फेमिलियर मेंटेन करते हैं घर में कि आपको आपको क्या क्या करना है नो। सो दैट इज द बेसिकली ऑल टुगेदर इंडक्शन प्रोग्राम। सही है ना मैम? अनिकेत दिस यस मैम मैम, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूटा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन पूर्वरु आसीबार थिला ना? प्रिलिमिनारी इंटरव्यूटा कहा पूर्वरु आसीबो? स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन पूर्वरु। स्क्रीनिंग ऑफ द सुनो मु कोन कहली बाबू, मु कहली कि एटा हला गुटे प्रोसेस हैला, आ भितरे कोडा ऊपर होई पारे कोडा तळको होई पारे हैला। एटा हला गुटे प्रोसेस कि पूर्वरु करि पारे, कि परे करि पारे, कि रिटर्न करि कि पीआई करि पारे, कि खाली पीआई रे नै पारे, कि जीडीपीआई रे जाई पारे, हां कि कोन करे ना पीआई रो 5टा स्टेप करि पारे, कि हमर रिटर्न टेस्ट रहला, प्रीलिम टेस्ट रहला, फाइनल रिटर्न टेस्ट रहला, तापरे पीआई जाई पारे। एटा दिस इज अ प्रोसीजर, एटा ऊपर तळ आग पछ सब किछ होई पारे। इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मु पूरा स्टार्टिंग रे कहि गिरी मु सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट करतेली हैला। यस मैम, यू आर राइट मैम। मैम गोटे क्वेश्चन अछि। हेलो मैम, क्वेश्चन होछि हमर इंडक्शन ओरिएंटेशन आ ऑनबोर्डिंग परे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होबो ना? हां ना ता परे ना बाबा, इंडक्शन ओरिएंटेशन ऑनबोर्डिंग गोटे प्रोसेस एटा सरी गला देन आमे जिबा ट्रेनिंग को। नेक्स्ट क्लास रे मु आपनकर सिलेबस वाइज जाउची, सेहिति पय मु नेक्स्ट क्लास रे आपनकर ट्रांसफर प्रमोशन एम्प्लॉय सेपरेशन पढाई देबी, किंतु आ परे हला आमे ट्रेनिंग को जिबा। एटा सरीबो देन वी कैन स्टार्ट द ट्रेनिंग, देन वी कैन गो फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग सरला परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट करिबा, किंतु दो सिलेबस रे अछि तमरो ट्रांसफर प्रमोशन भीतर एना अछि। सो सेटा पे मु आगे ट्रांसफर प्रमोशन सेपरेशन नेक्स्ट क्लास रे पढाइबे हैला। मैम आगे हां सॉरी सुब्रत दिस साइड, मगर मैम हमर जो प्रैक्टिकल नॉलेज अछि जेंति ये आउट ऑफ द मतलब ये सिलेबस ला जेंति गुटे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज कैन वी मेंशन इन एग्जाम इफ दैट विल बी कंफर्टेबल, अगर इस टाइप के एग्जाम आते जेंति गुटे एग्जांपल एटा थिला गुटे चार रिक्रूटमेंट पूरा एग्जाम टाइम रे तो आज्ञा you can give your practical knowledge and you can explain there with example, सेट्रे अधिक मार्क मिलिबो। श्योर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हैला आपण एटा लेखिबा सहित पॉइंट लेखिबा सहित यू कैन एक्सप्लेन योर प्रैक्टिकल नॉलेज, यू कैन शेयर देयर, जोटा कि बहुत बेस्ट हे पारे, बहुत ही बेस्ट। जोटा बहिरे तो अछि ताला जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दो माने 4-5 लाइन कैन ऐड दैट ना। यस थ्रू एग्जांपल यू कैन एक्सप्लेन योर प्रैक्टिकल नॉलेज। एटा पूरा सबुड बेस्ट हे पारिबो, सबुड बेस्ट दी बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके हे गला पिला माने सब बुझी गले तो? यस मैम, थैंक यू। ओके सुनंतु ताहाले स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपनकर यूनिट 1 कंप्लीट हे गला, यूनिट 2 आज कंप्लीट हे गला। यूनिट 2 रे आपण मन रखिबे दया करी व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मटेरियल सबु दिया जिवो आपण मनकू। यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपण ता पे जम्मा व्यस्त ही हुअंतनी। वंस क्लास कंप्लीट हे गला परे सेटा सर डिसाइड करिवे को मटेरियल दिया जिवो, केमति दिया जिवो, को वे रे दिया जिवो, सेटा मैनेजमेंट विल डिसाइड नो। आपण ता पे वरीड हुअंतनी, आपण खाली सिंसियरली आउ अटेंटिवली क्लास टा अटेंड करंतु, राइट। एंड आपण को यूनिट 2 रे हम कंप्लीट करले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मन रखिबे व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट आर द प्रोसेस मेथड टेक्निक। तीनटा आग समान, जोतरे के डिमांड और सप्लाई टा अछि पूरा ताको भूलिबेनी हैला। एंड आपनकर गला रिक्रूटमेंट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट आर द मेथड्स एंड टाइप सोर्सेस सब समान, किंतु आमे ताको खाली डिफरेंट वे रे डिवाइड करिचे हैला। सेटा को मन रखिबे रिक्रूटमेंट रे देन आसला सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन द प्रोसेस सरला एतिकी। सोर्सेस ऑफ व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट इज सिलेक्शन, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सेडी शॉर्ट क्वेश्चन रसिबो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू टाको मन रखिबे, ताको भूलिबेनी। टाइप ऑफ इंटरव्यू 1-to-1 इंटरव्यू, सीक्वेंशियल इंटरव्यू, डायरेक्टिव इंटरव्यू, जहां आसला से लिखि देबे हैला। देन सॉरी गला इंडक्शन पळेबे। इंडक्शन कोन? इट इज अ वेलकम प्रोग्राम फॉर द न्यू एम्प्लॉय where the organization will introduce rules, regulation, policy, procedure, दिया जिवो मटेरियल। स्टिल ऑब्जेक्टिव कोन? ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंस स्कोप एलिमेंट सब समान। धरंतु आपनको मो ऑब्जेक्टिव कहला सेठी पचाला व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, ताकू ही लिखिबे कोन? टू रिमूव फियर, टू क्रिएट गुड इंप्रेशन, टू कलेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, टू नो द कंपनी हिस्ट्री, टू नो द डिपार्टमेंट, टू नो द प्रोडक्ट, टू नो द रूल्स रेगुलेशन। सब आपण जानि चंती, आपनकर प्रैक्टिकल नॉलेज सेतिर काफी अछि हैला। सेटा को आपण सेठी लिखि देबे, सरी गला। आ ए जो प्रोसेस टा को कहा गला ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग जेते आसीबो मो सेठी कहली, बुझी गले ना? यस ना स्टूडेंट्स?
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Yes, yes. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank you, ma'am. Next Thank you so class, much, ma'am. next class we will discuss, we will start promotion. Promotion छोटो chapter आगो promotion, transfer, separation complete करके हमें जिबा performance appraisal को की training को आज्ञा practical कौन कहले practical कौन कहली आज्ञा कौन कहली मु तो किछि मैंने मैम कहले कि आपन को प्रैक्टिकल नॉलेज अछि यू कैन आल्सो ऐड इन दैट एग्जाम आंसर शीट मैम इज थैंक यू ओके थैंक यू बाय बाय थैंक यू मैम थैंक यू ओके हां So, class.